Assalamu alaikum everyone. I hope that you guys are having good time in Ramzan, mashallah. Having a lot of blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We're going to do a past perfect tense today, and since this is I would term as one of the most difficult, if I may say, or tricky tense out of all. So, इस वजह से I've thought that we are just going to do past perfect tense right now, and we would have, ताकि अभी तक ऐसे हो रहा था that we were having a couple of tenses every week, and we were dealing with them. But past perfect के लिए I have thought that at least you guys should practice this correctly first, and then we should have past perfect continuous as well for you. So I might as well send it in the same week, but or the other week, next week. But इसकी practice बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So here it goes. I'm going to explain this to you, and then inshallah I'd be sharing the other past perfect continuous later on. ठीक है? Now, past perfect tense. Basically, past perfect tense में कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, ऐसे इवेंट के बारे में बात किया जाता है जो कि पहले किसी टाइम पे हो चुका था. Some and if I talk about past perfect in detail, तो उसमें normally there are two couple of events in past perfect जिसमें एक event दूसरे के बाद हुआ. जो first event है उसमें बेसिकली हम had का यूज़ लगाते हैं. I'm going to come towards it in a minute. had का यूज़ लगाते हैं और उसके साथ verb की third form, and the event that that happened later on, we write it in simple past tense. What I mean is we write it with second form of verb. So we're going to discuss that in a minute. सबसे पहले हम simple past perfect tense का एक simple sentence ले लेते हैं और उस पर discuss करते हैं. उसके बाद I'll be telling you about a complex sentence in past perfect tense जिसमें दो events होते हैं, and we'll be talking about that in a minute. So सबसे पहले affirmative, which is positive sentence. इसमें जो subject है उसके बाद basically हम had का यूज़ लगाते हैं. had auxiliary plus verb's third form, verb की third form plus object. ठीक है, object. So subject plus had plus verb's third form plus object. For example, we had gone to US. We had gone to US. Normally, as I said, कि past perfect में we'll be having couple of events together. We'll talk about that later on. पहले मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पास्ट परफेक्ट में had के साथ verb की थर्ड फॉर्म आती है. इसको पहले कर लेते हैं, and then I'll come for the complex sentence. Now, if we talk about the negative sentence, so negative sentence में subject plus had plus not plus verb's third form plus object. For example, we had not traveled to US. We had not traveled to US. So had के साथ not लगाया जाता है और not के बाद verb की third form. ठीक है. We had not gone. Go went gone. We had not gone to US. ठीक है. Now, if we talk about interrogative or सवालिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमला, if we talk about that, in that we would have had coming at the beginning and subject taking the place of auxiliary had. Interrogative में had we gone to US. Basically had के बाद subject के बाद verb की third form और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. प्लीज़
Whenever you're writing an interrogative sentence, never ever forget क्वेश्चन मार्क. इसी वजह से मैंने फार्मूला में भी ख़ास मेंशन किया है. क्वेश्चन मार्क आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी मिस आउट नहीं करना, बिकॉज इफ़ यू डू दैट दैट्स अ फैटल एरर. कि आपने सवालिया जुमला तो बनाया लेकिन उसके आखिर में सवालिया निशान नहीं लगाया, तो ये एक बहुत बड़ा एरर है. ग्रामेटिकली आप एक एरर करेंगे. सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. सो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. नाउ हैविंग सेड दिस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में had plus subject plus not plus verb's third form plus object plus question mark. For example, had we not gone to US, or had we not traveled to US, excuse me, and then question mark. ठीक है. सो ये इंश्योर करना है आपने कि जब भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव तरह के जुमले आएंगे उनके एंड में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क डालेंगे. इफ़ यू डोंट पुट ए क्वेश्चन मार्क देयर, सो यू वुड बी मेकिंग ए मिस्टेक. इफ़ वी सी दीज एग्जाम्पल्स, I had finished my homework. I had finished my homework. This is an affirmative sentence. I had not finished my homework. I had not finished my homework. This is a negative statement carrying a negation. Had I finished my homework? Had I finished my homework? So basically here we've got had coming at the beginning and subject coming at the place of auxiliary had. So had I finished my homework, and then question mark. And if we talk about negative interrogative, so had I not finished my homework? Had I not finished my homework? So subject के बाद आप not place कर देते हैं. Had I not finished my homework? Likewise, had comes at the beginning and subject comes later. And after the subject you place not negation and then the rest of the sentence along with the question mark. So had I not finished my homework? I hope this is clear. Now I'll be coming to that complex side of it, जो कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि past perfect tense में generally दो इवेंट्स का जिक्र होता है. एक इवेंट जो कि पहले हो चुका था और एक इवेंट जो कि उसके बाद हुआ था. ये दोनों पास्ट में हुए. ठीक है. एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ, फॉलोड बाय दैट. मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एग्जांपल है. द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. सो अब हम अगर देखें, ये दो इवेंट थे. एक ये है कि पेशेंट रिकवर हुआ, बेहतर हो गया, और दूसरा इवेंट है डॉक्टर ने उसको विज़िट किया. तो जो इवेंट पहले हुआ था, यानी पेशेंट रिकवर हुआ था, ये इवेंट पहले हुआ था. सो द पेशेंट हैड रिकवर्ड. उस इवेंट में हम हैड का ऑक्सिलरी लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. और जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो बेसिकली पास्ट सिंपल में लिखा जाता है. सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो अभी अगर आप यहाँ पर भी देखें, इट सेज बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. सो विजिटेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. गॉट इट? सो इसको बस अब आपने जहन में रखना है दैट इन पास्ट परफेक्ट there are two events involved. One that took place earlier and the other that took place later. So earlier event in two gets auxiliary had plus verb's third form. तो जो earlier event है उसमें basically
auxiliary had लगाया जाता है along with verb's third form, and later event is written in simple past tense, for example, using second form of verb. और जो दूसरा इवेंट होता है उसमें बेसिकली हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह शेयर some quizzes as well with you all. I would like you guys to practice this as much. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ताकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेंसेस मेरे हिसाब से बहुत इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन उनमें से जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, कि जिसमें दो इवेंट्स का जिक्र है और उनके साथ कैसे डील करना है और उनको कैसे लेकर के चलना है. अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हमने लिखा द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. नाउ दिस वाज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. इफ़ वी वांट टू मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम दिस, सो बेसिकली वो इस तरह बनाया जाएगा, द पेशेंट हैड नॉट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. हैड के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, हैड नॉट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम. अब इसका अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सो बेसिकली उसमें हैड पहले आ जाएगा. हैड द पेशेंट रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर विजिटेड हिम क्वेश्चन मार्क. एंड इफ वी नीड टू मेक नेगेटिव इंटरोगेटिव, सो उसमें भी हैड पहले आएगा. एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेंटेंस. Had the patient not recovered before the doctor visited him question mark. So basically had the patient subject के बाद आप not place कर देंगे, had पहले आ जाएगा और not जो है subject के बाद place कर देंगे. Had the patient not recovered before the doctor visited him. I hope this is all clear. I can understand that this is bit complex. That is why I have tried not to clip it up with another tense, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप ज़रा बहुत ध्यान से करें, ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छा सा रिवाइज करें, रीइंफोर्स करें. एंड इंशाल्लाह in some days to come I'd be coming up with past perfect continuous tense. ठीक है? Thank you so much. That's about it for today. Look after yourselves, and I'll see you guys later on. Thank you. Khuda Hafiz.